Hi everyone, good afternoon all of you. समस्त पिला मन आसी जाओ। तो होची गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर अच्छी समस्त पिला माने ऑल ऑफ यू वॉइस क्लियर नाउ। गुड आफ्टरनून। तो वर्तमान आम डिस्कशन करिबा आपनकर पार्ट 4 रहुची एठी जाकी क्लास 4 5000 जीके जीएस एमसीक्यू फ्री सेशन रहुची ओडिसा सब एग्जाम पाई स्पेशली जोदी आपण प्रिपरेशन करूसंती ए सो एग्जाम पीओ पुलिस एसआई एएसओ ये सब पाई आपन को हेल्प करिवो। समस्त जॉइन कर दो, टिके हाई कर दियो को माने जॉइन कलो। हाँ एसएसबी मु लेखिनी ओडिसा रो सब लेखि देली आउ जागा हेलानी लेखिया को जेत्ती की जागा ला लेखि देली सब पाई हेल्प करिवो। ठीक अछि ओडिसा रो सब लेखिली काना आपुनी जागा दखर लेखिया को ना नहीं सब एग्जाम पाई हेल्प करिवो। ठीक अछि सेमिति नाही जे गुटी एग्जाम पाई पाठ गुटी एग्जाम डिफरेंस। ठीक है सब एसएसबी एग्जाम भी हेल्प करिवो जो माने टीचिंग एग्जाम दउसंती समान करे भी हेल्प करिवो। ठीक अछि टीचिंग एग्जाम पाई भी हेल्प करिवो। डिफरेंस किछि नाही केवल आपनकर क्वेश्चन लेवल डिपेंड करे जे को एग्जाम रो को टाइप रो क्वेश्चन आसी। हिस्ट्री कोन एसएसबी एग्जाम पाई हिस्ट्री सिलेबस अलगा आउ एस एग्जाम पाई हिस्ट्री सिलेबस अलगा कोठी आ भीतर मोर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिसिंग आसी अछि लेवल अलग अलग मध्य अछि सब पाई हेल्प करिवो। व्हिच फॉलोइंग रिवर estuaries from this Sundarban delta is the world largest mangrove forest ecosystem। पिला मन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर estuaries को रिवर estuaries फॉर्म करि थाए दिस सुंदरबन डेल्टा जे कि वर्ल्ड रो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम। समस्त विजुअल होछि। गुड आफ्टरनून थैंक यू फॉर जॉइनिंग। कोठा हबो पिला माने सुंदरबन डेल्टा आपनकर जो रिवर अछि से रिवर ना होछि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। मनेला गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऑप्शन आपन हे जो एठी बी राइट आंसर। पिला माने गंगा जोटा कि हमर पद्मा बोली कहूचे बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र जमुना बोली कहूचे एंड मेघना रिवर आर द फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल अक्रॉस द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट मध्य को जाईची लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मध्य को जाउची। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। आ क्वेश्चन माने बुझो प्रेसिडेंट एवं गवर्नर निज ऑफिस पर टर्म थिला बेले तांको पर कोनोसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग लागू होबो नाही एवं ताको इम्यून ताको मध्य फ्री करा जाईची तांको पे अप्लाई ही परिवो नाही। पचाची को आर्टिकल द्वारा मेंशन अछि एटा सब एटा तुम एटा पढ़ो तुमको निजर देख एग्जाम रे क्वेश्चन लेवल हम यदि कांसेप्ट क्लियर ही जिबा जो परीक्षा क्वेश्चन पड़िबो सब हमको आसीबो। यदि कांसेप्ट क्लियर ना हो ताले किसी क्वेश्चन करि परबो इजी क्वेश्चन आसीबो डिफिकल्टी क्वेश्चन आसीबो बुझिला नहीं। तेनु बुझिला पिला माने हो पचाची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल पचारिची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करूची इम्यूनिटीज फ्रॉम गवर्नर एंड आल्सो प्रेसिडेंट तांको पर कोनसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग लागू होबो नाही
आर्टिकल 361 आर एक्सप्लेनेशन मध्य अछि हला किंतु सिविल एक्शन लागि परियो सिविल प्रोसीडिंग रिगार्डिंग पर्सनल एक्ट कैन ओनली बी पिया मन लागि पर आफ्टर इट नोटिस ऑफ द एटलीस्ट 2 months स्टार्टिंग द नेचर ऑफ द क्लेम किंतु लागि परियो कोन सिविल मैटर लागि परियो क्रिमिनल लागि परियो नाही व्हिच कमिटी रेकमेंडेड implementation of goods and service tax framework हमर जो जीएसटी पिला माने स्टार्ट हेइथिला 2017 मसिया जुलाई 1 रु तापे को कमिटी रेकमेंडेशन देइथिला जीएसटी ऊपर थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑल पिला मान टिके समस्त लाइक कर दियो को कमिटी रेकमेंडेशन देइथिला जीएसटी ऊपर मन रखिबो ऑप्शन है जो विजय केलकर टैक्स फोर्स कमिटी कौन है विजय केलकर टैक्स फोर्स कमिटी ऑप्शन है जोटा कि जीएसटी 101तम अमेंडमेंट एक्ट मन रखिबो 2016 रे एवं आर्टिकल 246 ए जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279 ए मन रखिबो ए दीटा आर्टिकल मन रखिबो एवं जीएसटी अंडर रे कौन कौन जाउची ये सब मन रखिबो ये सब जीएसटी अंडर रे मर्ज हो जाइछि हला जितरो इंडिया टैक्स थला एक्सेप्ट कस्टम एंड स्टेट एक्साइज सब जीएसटी अंडर रे मर्ज होइछि व्हिच ग्लोबल ट्रेटी अडॉप्टेड 1971 in an Iranian city it dedicated to specifically conservation and wise use of wetland the treaty ना कोन को अब तो treaty ना कोन ईरान शहर हेइथला बेसिकली wetland conservation पई थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑल गुड आफ्टरनून से ट्रेटी ना जो पिला मन रखियो रामसर कन्वेंशन ऑप्शन है बी राइट आंसर बुझिला ऑप्शन है बी राइट आंसर रामसर कन्वेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा आपनकर व्हिच केमिकल एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल मेटल एट रूम टेम्परेचर पचारिछि व्हिच केमिकल एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटीज ये जनरल साइंस सब विषय क्वेश्चन अच्छी आ ऊपर मध्य लिखाई किए को विषय क्वेश्चन अच्छी टेलीग्राम लिंक मु शेयर कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे बा लेखा मध्य होइछि आपण जॉइन करि परिबे टेलीग्राम माध्यम रे सिल्वर ऑप्शन है सी राइट आंसर कोन सिल्वर नेक्स्ट पिला माने जिबा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हु अमंग फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक पॉवर्टीज एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जोटी की ड्रेन थ्योरी मेंशन अछि जोटी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मेंशन अछि ए बही रो ऑथर किए थिले को ए बही रो ऑथर किए थिले रमेश चंद्र दत्त दादा भाई नारोजी गोपाल कृष्णा गोखेल एम जी राणाडे ए बही रो ऑथर किए थिले पिलामान जो बही ना होची पॉवर्टीज एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी जे कि फर्स्ट पर्सन पॉवर्टी कैलकुलेशन करथिले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन दी बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर पिला माने लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हम जानिचे व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया गोटे ब्रैकिश वाटर लेक अच्छी गोटे फ्रेश वाटर लेक अच्छी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया जोटा कि जम्मू एंड काश्मीर अच्छी जम्मू एंड काश्मीर को लेक अच्छी उल्लूर लेक अच्छी जोटा कि फ्रेश वाटर लेक हम ब्रैकिश वाटर चिलिका जीवरी ये मध्य रामसर साइट भी आड होता 1990 आड होता तुलबुल प्रोजेक्ट मध्य अच्छी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट मध्य बना जाइए उल्लूर बैरेज अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड पार्ट IXA एंड आर्टिकल 243P2 243ZP ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्बन लोकल बॉडी माने म्युनिसिपालिटी विषय पचारिछि एठी म्युनिसिपालिटी विषय पचारिछि कोड अब राइट आंसर
म्युनिसिपालिटी विषय पचारा माने एठी आपन 74 आर्टिकल हे जिवो मन रख 74 73 जिवारी पंचायत ये जिवारी म्युनिसिपालिटीज ये जिवा आपन राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने हमें जिबा 18 सब्जेक्ट अछि ता दरे 3 टार स्ट्रक्चर मध्ये अछि। व्हिच इंडेक्स यूज्ड बाय नीति आयोग evaluate rank and baseline performance and progress of Indian state and UTs towards achieving UN sustainable development goal। ए जो UN sustainable development goal अचीव करया पई नीति आयोग को इंडेक्स बाहर करता है परफॉर्मेंस प्रोग्रेस ऑफ ऑल इंडियन स्टेट एंड UTs। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDG इंडेक्स, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल को से कहूँ कोटा पिला माने एठी को इंडेक्स बाहर करता है आपनकर एठी लिखिछि ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखिछि तो से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स ता नाउ अनुसार से इंडेक्स बाहर करिवो। ऑप्शन ए जो मध्य बी राइट आंसर। ऑप्शन ए जीवो एठी बी राइट आंसर हला। एटी मेंशन कर देछि एस्पिरेंट 0 to 49, परफॉर्मर स्टेट 52 to 64, फ्रंट रनर 65 to 90 एंड अचीवर 100%। एमती कैटेगरी अछि रैंक को स्टेट को रैंक रे मध्ये अछि तार एटी देइ देला आपनकर पैरामीटर। व्हिच गैस प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज and account for largest volume of atmospheric anthropogenic greenhouse gas। को गैस प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पई को गैस रिस्पांसिबल प्राइमरी ये पिला सुआजी कुआडे गलो व्हिच गैस इज प्राइमरी रिस्पांसिबल आम जानी प्राइमरी पचारि प्राइमरी वर्ड आसो माने आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड आसो कौन आसो कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि रफली 75 to 80% टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जनरेट कर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामन जीवा which phenomenon describe that the scattering of light beam by microscopic colloidal particles suspended in a liquid or gas making the path of light visible। पिला माने जनरल साइंस क्वेश्चन मध्ये मोठी ऐड करिछि काहेकि ना किछि क्वेश्चन भी जनरल साइंस से आसुछि आपनको। which phenomenon describe करथे scattering of light beam by microscopic colloidal particles suspend in a liquid or gas making the path of light visible ताकू phenomenon कहिता कोन पिला माने Tyndall effect बोली कहिथाउ। ऑप्शन ए जीवो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने साइंस क्वेश्चन मध्ये आपन को आसुची हु लेड द फेमस सॉल्ट मार्च डांडी मार्च इन मार्च एप्रिल। ये तो आपन जानथिबो एटा बहुत इजी क्वेश्चन। डांडी मार्च के नैथिले बा दांडी मार्च बा दांडी लवण सत्याग्रह की स्टार्ट करथिले ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपन को आसीबो महात्मा गांधी राइट आंसर हो। गुड आफ्टरनून थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर सेपरेटिंग इंडो गंगेटिक प्लान फ्रॉम डेक्कन प्लेटू। इंडो गंगेटिक प्लान फ्रॉम डेक्कन प्लेटू को माउंटेन रेंज नेचुरल बैरियर सजिछि इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम डेक्कन प्लेटू। अरावली रेंज, विंध्या रेंज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। व्हिच माउंटेन रेंज एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर सेपरेटिंग द इंडो गंगेटिक प्लान फ्रॉम डेक्कन प्लेटू। कोड अब राइट आंसर पिला माने एठी विंध्या रेंज। ऑप्शन ए जो बी मन रखियो विंध्या पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट को पावर देछि टू अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में गोटे स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिया जिवो को आर्टिकल मेंशन अछि 350 350 ए 350 बी 351। व्हिच आर्टिकल और देछि प्रेसिडेंट को गोटे लिंग्विस्टिक
ऑफिसर अपॉइंटमेंट करिवे। ये आंसर है जो आपनकर 350 आर्टिकल बी, सब आर्टिकल बी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट nor it does lead to any reduction in the government liabilities। गवर्नमेंट लाइबिलिटीज कम करेनी कि कोनोसी फिजिकल फाइनेंशियल एसेट मध्य क्रिएट करेनी। से एक्सपेंडिचर ना कोन? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड। कोनोसी फिजिकल फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करेनी। तापरे एठी क्वेश्चन आसिला आपनकर जे nor does it lead to any reduction in the government liabilities। ताकू को एक्सपेंडिचर कहिबा? गवर्नमेंट लाइबिलिटीज कम करेनी कि फाइनेंशियल फिजिकल एसेट क्रिएट करेनी, ता ना होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल हेले फाइनेंशियल एसेट हे जिवो, लैंड बिल्डिंग वगैरह। नॉन एसेट इंक्लूड पेमेंट, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, पब्लिक डेट, डिफेंस ऑपरेशनल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेंट्रल सब्सिडी। ये सब आपन जाउची आपन रेवेन्यू जाउची, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ स्पेसीज एक्ट एज ए ईयरली इंडिकेटर। आपन को ईयरली इंडिकेट दे दी थाए ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस। यदि किसी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होउची बा डिग्रेडेशन होउची बा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होउची, आपन को आगुआ से दे दी था इंडिकेट स्पेसिफिक इकोसिस्टम ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम सेंसिटिविटी पाई। ताको हमें कौन कही थाउ? से स्पेसीज के हमें को टाइप रो स्पेसीज कही थाउ जे कि आगुआ तुमको सतर्क करे दिए इस केस रे। थैंक यू। एटा पिला मन आपन ही जो राइट आंसर सी बायो इंडिकेटर। ए जो बायो इंडिकेटर बाय इंडिकेटर स्पेसीज ऑप्शन ए जो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने which optical phenomenon it utilized in optical fiber cable to transmit light signal over long distance with minimum loss of energy। ये गोटे जनरल साइंस क्वेश्चन को पिला माने कहबो। which optical phenomenon is utilized in optical fiber cable। optical fiber cable यूज होइत है to transmit light signal over long distance। ता कोन कहि थाउ? with minimum loss of energy। ताको हम कहि था मन रखियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोन हे जिवो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जिया हु अमंग फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एग्रेसिवली अप्लाइड टू अनेक्स इंडियन प्रिंसिपल स्टेट लाइक सतारा, झांसी एंड संबलपुर। हु अमंग फॉलोइंग किए सेतबले गवर्नर जनरल थिले जेतबले आपनकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्रेसिवली अप्लाई हितला इंडियन प्रिंसिपल स्टेट सतारा, झांसी, नागपुर। पिला माने एटा में समस्त जानिचे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किए लागू करथिले एवं तांकर कार्यकाल थिला पिला माने 1848 रु 1856 कार्यकाल थिला एवं से पॉलिसी लागू करथिले लॉर्ड डालहौजी। ऑप्शन ए जो पिला माने ऑप्शन ए जो बी राइट आंसर। ऑप्शन ए जो ठीक अपन को बी राइट आंसर। एट लिखा है सतारा के बेला 1848 फर्स्ट स्टेट एनेक्स अंडर दिस डॉक्ट्राइन। तापरे जयपुर, संबलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी 53 रे, नागपुर 54 रे, तापरे ग्रीवांसेस हला परे फाइनली 1858 एक्ट पास हला परे ये सब पॉलिसी की हटा दिया गला फाइनली पर। Which following thermal power plant or geographic region in India is home to country largest reserve of lignite। ब्राउन कोयला, ब्राउन कोयला कोठी बेसी अछि लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ब्राउन कोयला। ब्राउन कोयला कोठी अछि मन रखियो
लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट व ब्राउन कोयला ये ब्राउन कोल बोली कहती नेभेली तमिलनाडु ऑप्शन ए जो मन रखियो बी राइट आंसर नेभेली तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा आपनकर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट introduced the anti-defection law adding the 10th schedule to the Indian constitution anti-defection law को amendment act रे add हैला जोटा कि 10th schedule मध्य रहिला कोटा हबो राइट आंसर आपनकर एटी आंसर हो जिवो 52nd amendment act 1985 52nd amendment act 1985 next question पिला माने what is the term given to the market situation where there is only one buyer for a particular goods or service provided by the multiple seller थिबे गोटे buyer थिबे एई सिचुएशन को हमें कोन बोली कहिबा माने एठी जोटी की ओनली वन बायर गोटे बायर थिबे बहुत सेलर थिबे बहुत सेलर थिले गोटे सेलर थिले मोनोपोली हबो किंतु गोटे बायर बहुत सेलर कोन हे जिवो एटी जो मन रखियो मोनोपोली ऑप्शन इज योर सी राइट आंसर सिंगल बायर डोमिनेंस गोटे केवल सिंगल बायर अछि पिला माने मोनोपोली रेफर्स टू ए मार्केट स्ट्रक्चर जोटी की सिंगल बायर होल्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर बाय मल्टीपल कंपीटिंग सप्लायर मल्टीपल सप्लायर थियो गोटे बायर थियो ताको आजिवो मोनोपोली नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ग्लोबल ट्रेटी अडॉप्ट अंडर द यूएन in the 1997 legally binding emission reduction target for developed countries to tackle climate change ताको हमें कौन बोली कही था को ग्लोबल ट्रेटी ना कौन रिड्यूशन बाइंडिंग emission reduction target for developed countries to tackle climate change Paris agreement Kyoto protocol Montreal protocol Rio declaration से ट्रेटी ना कौन हो जिवो से ट्रेटी ना अपन हो जिवो ठी कायोटो प्रोटोकॉल ऑप्शन हो जिवो बी राइट आंसर मानेला ऑप्शन हो जिवो अपन बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में जिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच फंडामेंटल पार्टिकल predicted by Peter Higgs and confirmed that CERN large ये पिला ने बहुत गोटे आपनकर काना कोन जनरल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन लार्ज हार्डन कोलिडोर 2012 रेस्पोंसिबल फॉर इंपार्टिंग मास एलिमेंटरी पार्टिकल्स व्हिच फंडामेंटल पार्टिकल प्रेडिक्टेड बाय तांको नाउ अनुसार हिग्स पिला माने तांको नाउ अनुसार माने एटी जो हिग्स बोसन तांको ना जिया तांको नाउ अनुसार हे जो हिग्स बोसन फंडामेंटल पार्टिकल्स imparting mass to elementary particles next question jiba pila mane ati pacharichi who among following was founder of the Hindustan Socialist Republican Association HSRA reorganized at Firozshah Kotla in Delhi 1928 who among following was founder आंको जरे किए फाउंडर थिले HSRA रो जोटा कि रीऑर्गेनाइज एट फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली 1928 एटी किए बे फाउंडर हु अमंग फॉलोइंग वाज फाउंडर एटी फाउंडर हि जमन रखो चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन इज बी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह 1924 रे ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइज एट दिल्ली 1928 रे बाय चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुखदेव एंड भगवती चरण बोरा ये सब रीऑर्गेनाइज करथिले Which following river basin in India contains the highest potential for
जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट नोटेबल वाटे पुगा वैली व्हिच को रिवर बेसिन मन रखियो इंडिया कंटेन्स हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर ग्रीन जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट कोटी अच्छी बेसी नोटेबल बाय पुगा वैली पाखापाखि इंडस रिवर बेसिन नर्मदा रिवर बेसिन गोदावरी बेसिन महानदी बेसिन एठी कोड हबो राइट आंसर एठी हिज आपनकर इंडस रिवर बेसिन लद्दाख एठी लार्जेस्ट पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जाकि सब्स्टिट्यूट कला फेज इंटरनल आगुर थला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस तापरे आर्म रिबिलियन करा गला फॉर अप्लाई ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो आर्टिकल 352 अनुसार ए जो आर्म रिबिलियन चेंज हला आगुर थला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को अमेंडमेंट आटा को चेंज कला 24th 42nd 44th 52nd को अमेंडमेंट एक्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कला आर्म रिबिलियन 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर नेक्स्ट पिलामन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला आपनकर व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमेनन वेयर इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग लीड टू राइज इंटरेस्ट रेट thereby reducing private sector investment spending private sector investment spending कमी दिए गवर्नमेंट बोरोइंग स्पेंडिंग लीड टू राइज इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी जाए यही समय को हम कौन कहबा ए फिनोमेनन को क्राउडिंग आउट इफेक्ट लिक्विडिटी ट्रैप डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट फिस्कल ड्रैग ए जो कांसेप्ट हसला आपन को समय जोटी की इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग गवर्नमेंट बेसी बोरोइंग करता है स्पेंडिंग करता है जहाँ फल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी जाए जोटा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम होता है ए समय को आम कही था क्राउडिंग आउट इफेक्ट कौन कही मन रखियो क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑप्शन ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जिया व्हिच इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड अंडर the auspices of the UN aims to protect human health environment जा लक्ष्य रहिला ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्ट करिवो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करिवो फ्रॉम टॉक्सिक hazard of mercury emissions ता ना कोन हिजबो को इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हैला मर्क्यूरी विषय रे मन रखियो मर्क्यूरी इमिशन जोगु जहा जहा प्रॉब्लम होउची ता केमिति कम करिवा एठी से इंटरनेशनल एग्रीमेंट ना कौन थिला आड़े आसुची हो गोटे गोटे आड़ आसुची चले दियो सेम तो 8टा पिला क्लास करूचो गोटे आड़ उठके स्किप कर दियो कोठी 200 300 भी होउची टंका दे मिलुनी जा आड़ आसुची टिके चले दियो तार हबो मीना माता कन्वेंशन 200 300 400 भी होउची गोटे गोटे मनाकू क्वेश्चन बनिया घंटे लगुच क्लास कर घंटे 2 घंटा टाइम दूसरी 300 400 व्यू जाऊनी गोटे आड़ को एडजस्टमेंट कर दियो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउ इंसेक्ट लाइक वाटर पिला माने स्टीडर्स टू वॉक अक्रॉस इट्स सरफेस विदाउट सिंकिंग कौन बेटा व्हिच प्रॉपर्टी वाटर वाटर को प्रॉपर्टी अलाउ करि थाए एठी जे आपनकर सरफेस टेंशन ऑप्शन इज योर सी राइट आंसर सरफेस टेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हु अमंग फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर 1916 लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर The Lucknow Pact between INC Muslim League was signed. ये जो लखनऊ सेशन होइतला जोटी INC वो मुस्लिम लीग मध्ये गोटे पैक्ट साइन हैला से सेशन रो प्रेसिडेंटशिप के करथिले अनिल बेसंत रासबिहारी घोष मदन मोहन आपनकर मालविया अंबिका चरण मजुमदार आंसर इज ऑप्शन इज ए राइट आंसर अंबिका चरण मजुमदार
witness signing the landmark Lucknow Pact between Indian National Congress and Muslim League to present joint constitutional demand to the British administrations. Next question आपण आसीबो इंडियन ज्योग्राफी ऊपर which among following river India famous for creating the majestic jog fall को रिवर सिस्टम रे जग फॉल क्रिएट होइछ कावेरी सरबती पेरियार कृष्णा कोठी एटा को रिवर सिस्टम रे जग फॉल तयारी छि ता ना हि जबठी सरभाठी रिवर ऑप्शन है जबठी बी राइट आंसर जग फॉल. Next question आपण आसीबो ठी पिला माने which article of Indian Constitution provides for the establishment of State Finance Commission by Governor to review the financial position पंचायत and municipality. Financial position of पंचायत municipality review करिया पई गोटे finance commission आसिला से commission पछछि को आर्टिकल द्वारा प्रोवाइड कला ए finance commission. Which article provides creation of State Finance Commission to review the financial position of panchayat and municipalities? Article मन रखियो 2, 4, 3 sub article 1 sorry I sub article I. Above governor of state that State Finance Commission प्रति 5 वर्ष थरे गवर्नर तयारी करिवे. Distribution of net toll tax due to proceed between state government and local bodies. Next question कहला which economic indicator measure average change over time in the prices paid by urban rural consumer for a representative basket of consumer goods and services in India. से कहछि which economic indicator measure करि थाए the average change over time in the prices paid by urban and rural consumer for representative basket of consumer goods and services. ए इंडिकेटर को हमें कोन कहि थाउ ए इंडिकेटर को हमें कोन कहि थाउ मन रखो आ कोन कहि थाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोन कहि थाउ मन रखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which international agreement signed in 1987 जहाँ लक्ष्य होची phasing out production of consumption of ozone depleting substances ODS such as chlorofluorocarbon CFC से एग्रीमेंट और ना कौन से एग्रीमेंट और ना कौन एग्रीमेंट ना हिजबो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन है जीवो आपनको बी राइट आंसर. बी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि पिला माने जनरल साइंस व्हिच स्टेट ऑफ मैटर formed at extremely low temperature near absolute zero causes atom to clump together and act as a single macro quantum entity से ता ना कोन which state of matter formed at extremely low temperature तैयारी है near the zero causes atom to clump together and act as a single micro quantum entity ता ना होची बोस आइंस्टाइन condensate. ऑप्शन है जो बी ई सी खाली डेफिनेशन पचारिछि जनरल साइंस रो. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु लेड दी बारदोली सत्याग्रह 1928 इन गुजरात अगेंस्ट दी अनजस्टिफाइड 22% hike in land revenue imposed by British administrations earning title सरदार. सही सत्याग्रह पर ताको टाइटल मिलला सरदार जे कि बारदोली सत्याग्रह जोटा कि हाई केतिला लैंड रेवेन्यू को बेस करके ताको हला कोन ना सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल. ऑप्शन इज योर राइट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहले आपनकर
Which following physical division of India is characterized by presence of करवा कोठी करवा अच्छी glacial clay deposit famous for saffron cultivation ପାଇଁ famous करवा a glacial clay deposit से पता आपन कोड हबो राइट आंसर को जगह बेसिकली ग्लासियल तुमको ग्लासियल क्ले डिपोजिट फेमस फॉर saffron cultivation ପାଇଁ फेमस को जगह हबो राइट आंसर इट इज आपनकर काश्मीर हिमालय ऑप्शन है जो ए राइट आंसर काश्मीर हिमालय नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने हम जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ interstate council by president to investigate and discuss subject of common interest between union and state को आर्टिकल पिला माने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल गठन करिछि जोटा कि जा लक्ष्य होछि पिला माने हमर इन्वेस्टिगेट करिवो डिस्कस करिवो कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन टू यूनियन एंड स्टेट यूनियन सेंटर ऑफ स्टेट मध्य जा कि कॉन्फ्लिक्ट होछि आ स्टेट मध्य जा कि कॉन्फ्लिक्ट होछि तो सॉल्व करिवो को आर्टिकल मन रखियो आर्टिकल 263 अनुसार हम ओटे इंटरस्टेट काउंसिल तयारी करी नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें पिला माने which type of unemployment occur when worker are temporarily between job or searching new job मु जॉब रो अछि किंतु सर्च करूछि आ ओटे नुवा जॉब यो सर्चिंग टाइम मध्यरे जो मु टाइम लैप्स कली से टाइप ऑफ जॉब को मु को टाइप रो कहबी अनएम्प्लॉयमेंट सपोज मु गोटे जॉब रो अछि मत चाहूछि आ गोटे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी पई मु किछि टाइम सर्च कली सर्च करियारे निबा एठी स्पेंड कली जो टाइम सर्च कली मु बेकार घर बसिली किछि इनकम मोद रहलानी सेही समय को प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट कहिबा ला को पिला माने कोडा राइट आंसर ता कोन जी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो समय सर्चिंग करिया लागिली से समय को आजीवो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा व्हिच ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज और ट्रेटी मेकानिज्म adopted in 1989 regulate transboundary movement and disposal of hazardous waste of toxic trade बेसेल स्टॉकहोम रोटरडम मिनामाता से कहछि आपनकर व्हिच ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रेड फैसिलिटी बा ट्रेटी 1989 रहितला रेगुलेट ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ hazardous waste to prevent toxic trade ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट हे परिबो नै आपन गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री की मूवमेंट करि परिबो नाही कोन hazardous waste ता नाम होछि बेसेल कन्वेंशंस ऑप्शन इज जो राइट आंसर बेसेल कन्वेंशंस बुझिला चलो which enzyme present in human saliva present begin in the chemical digestion of carbohydrates by breaking down complex stretches into पिला माने maltose सेही एंजाइम ना कोन जे ह्यूमन सालिवा रे अछि ता ना कोन ता नाउन से भी दे देछि जो सालिवा लिखिछि सालिभारी पिला अम्लाइज ता नाउन से भी दे देछि सेही एंजाइम ना जनरल साइंस टे डिफिकल्ट आपन लागिवो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हु अमंग फॉलोइंग फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी ए सीक्रेट revolutionary organization in Maharashtra अभिनव भारत सोसाइटीज इन महाराष्ट्र 1904 मसीह विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर अरविंद घोष बारिंद्र कुमार घोष रासबिहारी घोष सचिनंदनाथ सन्याल की हिजबो पिला माने हु अमंग फॉलोइंग फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटीज मन रखियो विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर ऑप्शन है जो आपनकर राइट आंसर ए अभिनव भारत सोसाइटीज
बा यंग इंडिया सोसाइटी बोली आम कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामन जीवा व्हिच फॉलोइंग रिवर बेसिन इन इंडिया होम टू फेमस धुरंधर फॉल नियर जवालापुर। ताप्ती रिवर बेसिन, नर्मदा रिवर बेसिन, महानदी रिवर बेसिन, गोदावरी रिवर बेसिन धुरंधर फॉल पाई फेमस। पिलामाने को रिवर बेसिन अब बी नर्मदा रिवर बेसिन जवालापुर अच्छी ना जवालापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामन जीवा आपनकर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी आम जानिचे तीनोटी इमरजेंसी अच्छी ता भितर गोटे आपनकर स्टेट इमरजेंसी कोठ जाउची को आर्टिकल एम्पावर करूची। स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 जोटा कि आम कहि परिबा प्रेसिडेंट रूल बोली कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक एगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिकरी देई थाई लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एगेंस्ट टू कमर्शियल बैंक एगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ताको हम कहि थाउ मन रखिबो रिपो रेट कहि थाउ। रिपो रेट होची बंधक रखिकी लोन देई थाए बैंक रेट रे बिना बंधक रे लोन देई थाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कमर्शियल बैंक। गोटे शॉर्ट टर्म गोटे लॉन्ग टर्म। व्हिच इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हैला 1973 रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन specimen of wild animal plant to ensure their survival is not threatened। ताना कौन है जो which international agreement signed in 1973 regulate international trade in specimens of wild animals and plant to ensure their survival is not threatened। कौन है जो ठीक साइट ऑप्शन है जो बी मन रखिबो साइट। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा तार फुल फॉर्म मन रखि आल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहि थाउ जोटा कि 1975 मसिया रे हितला। Which fundamental physical law state that total electric flux out of a closed surface is equal to 1/0 times the net electric charge of enclosed by that surface। को लॉ खाली पचार पिला माने जनरल साइंस ऊपर मोर बेसी नॉलेज नाही ता नाउ छी गाउसेस लॉ। ठीक अछि मोर जनरल साइंस विषय केते नॉलेज नाही। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कहले मु कहि पाहि। Who among following was founder of the Indian Home Rule Society established in London 1905 लंडन 1905 रे along with famous hostel India House किए करथिले इंडियन होम रूल सोसाइटी लंडन 1905 ता सहित गोटे फेमस हॉस्टल ता ना थिला इंडिया हाउस ता ना थिला इंडिया हाउस ता ना है जीवो श्यामजी कृष्णा वर्मा मन रखी। एतिक थिला पिला माने आज क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन कली। ठीक अछि ये 342 से 8 टोटल 50 क्वेश्चन कली। पिला माने जो माने नुआ छ टिके चैनल को सब्सक्राइब करनियो बेल आइकन क्लिक करो जहाँ द्वारा नेक्स्ट अपडेट अपन मान पाखे बहुत जल्दी पहुंच पारिबो। ठीक है लाइक मध्य कर दियो। थैंक यू। इतला पार्ट 4 देन पार्ट 5 अपन बहुत जल्दी नहीं आसी। थैंक यू।